Namaste. Once again, we are here. As we said, every Tuesday हम आएंगे. आज फिर आए हैं. आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. सब जगह पे सब लोग महाशिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं. हमने बैंकॉक में भी मनाया है और इंडिया में भी काफ़ी यार दोस्तों ने मनाया और सुबह से एक दूसरे को विशेष भेज रहे हैं महाशिवरात्रि जी की. एक बहुत अच्छी मैसेज आई मुझे मेरे दोस्त राजू मनवानी से. जो बंधन में है वो जीव है, जो बंधन से मुक्त है वो शिव है. व्हाट अ वंडरफुल मैसेज. महाशिवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं. हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय. हमारे साथ जुड़ रही हैं सिमरन आहूजा जी. मैं उनको स्क्रीन पे बुलाऊंगा अभी. Har Har Mahadev, Om Namah Shivaya. ओम नमः God's शिवाय. grace and Om Namah Shivaya. And what a beautiful saying, by Raju Manwani ji, you said. And, I'm here hosting the Great Indian Awards. And Lion Dr. Raju Manwani ji is expected to be here joining us for the awards as well. So this is the beautiful coincidence. So it's such a pleasure. Raju Manwani, Bangkok one. We have two Raju Manwani. One is Bombay one, one is Bangkok. Ji. Oh, wonderful. But I'm so excited and delighted to be here on this very spiritual, auspicious day, and Papni Thakur sir. I love your backdrops. I'm at the same time seeking blessings of Lord Shiva. It's time for us to truly celebrate this beautiful day, a very, very auspicious day. We all think of our own souls and purifying our hearts and souls. So Har Har Mahadev and Papni Thakur sir, thank you for all the love and warmth that I received, and I met your entire family of Adhyatmik Parmarth there in Thailand, Bangkok. It was super awesome, very, very special. Ji, Simran ji, now let me welcome Suchitra ji, Suchitra Deep from Bangalore. Let me welcome her on a screen. Wow. Suchitra, welcome. जी, ये आप इनको देख रहे हैं. ये आर्किटेक्ट हैं, बेंगलोर में हैं और काफ़ी कम्युनिटी काम कर रही हैं. अभी मैं उनसे कुछ पूछूं उनसे. इट्स बेटर टू मैं आपसे सुनना चाहता हूं. सुचित्रा जी, कैन यू टेल मी अबाउट योर, कैन यू टर्न ऑन योर माइक्रोफोन? Yes, sorry. We still, even after 2 years of pandemic calls and all that, we still goof up on these small things when it comes to that. So I think firstly, thank you so much for inviting me here and making me part of your Adhyatmik family, because we are all actually one. So I was telling Papni ji that thoda main nervous ho rahi hu. Then I thought to myself, ye sab to mere brothers and sisters across the world, whoever it is, we're all one heart. Simran ji was here 2 days ago and she rushed from here to Dubai and from Dubai to Bombay. I don't know. She salute to her. And now she's going for show and she's going towards stage also. Wow. Thanks to her that for 2 minutes she took it out and she's coming to us. Yes. I wanted to say a big, lovely hello and virtual hugs to you, Suchitra. Such a pleasure having you here on the show. Thank you, guys, and thank you, Papni sir. I'll try and catch you guys, and I'll catch up with the show very soon. Yeah. Thank you and God bless. Have a great show. Bye. See you all. God bless. Bye. Ji, Suchitra ji. Yeah, I'd like to hear about you. Yeah, thank you so much. I'm just just a regular human being, regular person, just like everybody else. Nothing different about me. I think one of the things that I would like to say is that we all forget that really that we are divine in the human form, and sometimes things happen in our life which helps to show us that. So I'll tell you a little bit about how I came to the sort of the spiritual path, because that's really the base of my life in some sense. I
I grew up in a family which was my father was very much into spirituality, you know, and always there were books of spirituality. Dada Vaswani's books were always there, Mm-hmm. and amongst others, you know, Vivekananda and Ramakrishna and you know, even the Christian, whatever, every faith, every kind of spiritual process. And so maybe that was already there. And maybe when I was about 15, 14, 15, I became very fond of this. I read this series called Krishna Avatar, and I don't know, it was became such a huge inspiration that Mm-hmm. I decided I wanted to go to Brindavan and sort of literally like maybe stay there. I don't know what I thought. Maybe I'll feel see Krishnaji around the corner. It was such a real experience. Like maybe that's an innocence of that age, and Mm-hmm. some longing, I guess, came at that time. It felt like there was a void inside me, which I really needed to sort of get filled in some way. Something was, you know, that longing was. And my parents were into meditation. My father, much earlier, my mother also. Uh, though we came from a very strictly orthodox Vaishnav family, but later on, you know, as they took up meditation, उनको उससे ज़्यादा लगाव हो गया. और Mm-hmm. तो ये that thing was there, you know, that exposure was there. And there came some circumstances in my life कि ना चाहते हुए भी मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया. और पहले the very first time I meditated, it was as though, you know, I still cannot forget. I felt such love, like a mother is taking the child and, you know, giving a like a you know, just gently they give a lullaby and sing a lullaby and put them to sleep like that. Such a gentle, beautiful feeling, and that Mm-hmm. whole literally that was there in my heart, it just got filled. So somehow पकड़ लिया मुझे उसने. I mean, I just was lost after that to this. जी। और मैंने ये भी आपके लिए सुना, आपका सुना है कि आप कुछ कम्युनिटी मलेश्वरम सोशल कम्युनिटी ग्रुप है वो, आप उससे भी जुड़े हुए हैं। यू हाँ, आर द फाउंडर, राइट? yes, yes. वो So क्या है? कैन यू? या बताइए, सॉरी सॉरी. नहीं नहीं, आप बताइए उस बारे में। मुझे मुझे हल्के से सुनी है मैंने बात, तो व्यूअर्स भी सुनेंगे। मलेश्वरम So क्या है? yeah, so actually I was pretty busy with my career के साथ काफ़ी busy रही क्योंकि I was a partner. मेरा अपना पार्टनरशिप फर्म था. और आपको तो मालूम है कि मतलब काम तो बहुत ज़्यादा रहता है, फिर बच्चों को भी संभालना, घर भी संभालना, सब लेडीज़ को तो हर चीज़ करनी पड़ती है. तो मैं काफ़ी बिजी रही, मगर दिल में एक ख्वाहिश ऑलवेज देयर वाज समथिंग कि कम्युनिटी के लिए कुछ करना है. और जैसे जैसे लाइक आई वाज गेटिंग यू नो टू अ पॉइंट, आई सेड कुछ ना कुछ तो करना ही है. और लोग भी, यू नो, द रियल रीजन आई स्टार्टेड वाज नॉट कम्युनिटी सर्विस, मगर मुझे लगा कि लोगों के बीच में इतना दायरा बढ़ रहा है, नो, पीपल आर जस्ट नॉट गेटिंग टुगेदर. तो कम्युनिटी को, लोगों को जुड़ना चाहिए. दे शुड बी सम वे ऑफ गेटिंग टुगेदर. तो जहाँ मैं रहती हूँ मलेश्वरम बैंगलोर में, तो काफ़ी पुरानी जगह है. इट इज़ वेरी, यू नो, गॉट अ डीप हेरिटेज. तो मुझे लगा कि कुछ ग्रुप शुरू करना चाहिए. तो पहले शुरू हुआ सोशल कनेक्शंस फॉर्म करने के लिए, फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्विस में लग गए क्योंकि सबको लगा कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, यू नो, टू बेटर द प्लेस. तो अब तो ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं. So that's how it is. And I get a lot of, I would say I get a lot of guidance from the meditative path on this. ओके, एक और दूसरा बात सुननी है मैंने, सुनद, क्या, हाउ यू प्रोनाउंस? सुनद Sunaad, Sunaad. So सुना Sunaad, सुना। Sunaad. ये क्या है और आप कैसे जुड़े हैं उनसे? तो मुझे ऑलवेज आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. और ये सुनाद इज अ लाइक अ ग्रुप ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप है. आप जिसको भी, जैसे एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, एंड दिस इज हिंदुस्तानी म्यूजिक. तो हर शनिवार सुबह को हम मिलते हैं. वी मीट फॉर अबाउट 1.5 to 2 hours.
एंड एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि आपको गाना आना चाहिए या आप आपको अच्छी आई मीन यू शुड हैव हम्म, सम नॉलेज, सिर्फ दिलचस्पी होनी चाहिए, दैट्स ऑल दैट्स रिक्वायर्ड. तो अभी आई थिंक इट्स अबाउट 16 years सिंस आई बीन विद देम, और हम काफ़ी परफॉर्मेंसेस भी करते हैं. और since the last 10 years, in fact, we are doing all the Upanishads one by one. So we did Katha Upanishad, then we did ओहो, Ishavasya Upanishad, then we did Mandukya. अभी recently last year we did Kenopanishad. उधर pandemic भी हमने किया, तो काफ़ी challenging भी था, मगर उपनिषद गाने से हमें जो मिलता है, unbelievable, unbelievable. इज इट ऑनलाइन और या हाँ. फेस फेस टू फेस मिल के वहाँ पर गुरु और शिष्य की परंपरा को तो या हाँ, डिजिटली ये यू कैन मीट तो लाइक दे आर पैंडेमिक ऑन के दिस टाइम पे प्लेटफॉर्म तो मेनी ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं, वो भी हाँ, सुन रहे हैं, तो वो हाँ, हाँ. आपकी सुनाद से कैसे जुड़े? तो पैंडेमिक के टाइम तो वी कुड नॉट मीट, तो वी हैड टू गो ऑनलाइन, और कोई रास्ता नहीं था. तो हर हफ्ते हम ऑनलाइन मिलते थे. अभी पिछले 2 हफ्तों से इनफैक्ट वी हैव फाइनली गॉट बैक ऑफलाइन, क्योंकि सिर्फ गाना नहीं होता, खाना भी होता है. हाँ हाँ, ओके, आपको तो मालूम है कि ऑल दीज थिंग्स गो टुगेदर. जी जी सो जी, बट ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं. माय टीचर ताराकिनी, शी टीचर्स ध्रुपद, तो वो ओके, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करती हैं ऑनलाइन. तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आई एम हैप्पी टू हेल्प देम गेट इन टच. जी जी, व्यूअर्स को हम कह रहे हैं, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज हाँ, ज्वाइन इन, ये म्यूजिक या भी सीख लेंगे जी. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. अभी चलते हैं, आपने जो आज टॉपिक चुना है, हार्टफुल अप्रोच टू लाइफ, इट्स अ वंडरफुल टॉपिक, तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे. कुछ आपने वीडियो भी तैयार किए होंगे कुछ? हाँ जी. एक वीडियो है, आप दिखा सकते हैं. पहले 2 मिनट मैं उसके बारे में बात करूंगी. जी जी, हाँ, तो ये आपको तो मालूम होगा कि मेडिटेशन तो आजकल हर हर कोई इसके बारे में बात करता है. It's so well known. People are constantly talking about how the importance of how to meditate and all that. So I'm following a method of meditation. It's called Heartfulness meditation, जो कि heart based meditation. And the reason that we think it's very simple, that the seat of divinity is the heart. एंड हर कोई, आप कोई भी जैसे प्रथा देख लीजिए, किसी भी रिलीजियस या मिस्टिक, मतलब स्पिरिचुअल पाथ, यू टेक एनी ऑफ देम, they all follow this one thing, that inside the heart is the seat of love, and love is God. So why not attack that, use that as the go directly to the seat of things, in fact. And it is the seat of life. When your heart stops, you're dead, really. So it is so critical. So we feel that that heartfulness meditation, for the importance of the heart is very critical. तो आप अभी वीडियो दिखाइए, फिर हम फिर से बात कर सकते हैं उसके बारे में. जी. In a world full of chaos, stress, and anxiety, we all need a moment of peace. A moment when we let go of all worries. A moment that charges us to take on life's challenges. A moment when we plunge within ourselves and come out refreshed. A moment of simplicity. A moment of happiness. The source of real happiness lies within each of us, in our hearts. We just need to learn to connect with it. Our entire life is led by feelings and inspirations, and that is the role of the heart. And when we manage to listen to the feelings
and capture the inspirations that comes from within, I think we can master our life by listening to heart again and again. Heartfulness meditation is a form of Raja Yoga that teaches us how to connect to our heart. As one learns how to meditate deeply, letting go of all mental complexities and tuning into the heart, a sense of inner balance and calmness begins to prevail. The whole exercise of fine-tuning the heart with the mind is through this meditation on the heart. That's why we call this process heartfulness meditation. This simple yet effective system has been prevalent for more than 100 years. Today, it is followed by over 1 million people across 120 countries. Thousands of meditation, retreat, and research facilities serve as centers where individuals from all walks of life, diverse nationalities, different religious backgrounds, various social and economic circumstances come together, transcending boundaries in an atmosphere of love, trust, and brotherhood. With a significant online presence, the Heartfulness app, YouTube channel, Heartfulness magazine, and a rich body of literature makes the practice easily available to seekers. The Heartfulness Institute is a nonprofit organization that brings the Heartfulness meditation and relaxation methods to individuals, corporations, universities, schools, and communities. Thousands of volunteers and more than 6,000 certified trainers around the globe allow the services of the Institute to reach individuals totally free of charge. The vision of the Founding Fathers has been to create a society that is heart-centered, loving, and compassionate. Change in society can happen only through a change in each individual. Heartfulness is both an individual practice as well as a unifying movement. जी, wonderful video. Heartfulness. मैं आज सुबह को उठा तो एक थॉट आती है हमेशा, that I write it down. आज की थॉट थी embrace the moment. तो जो भी मोमेंट में है, जो भी स्थिति में है, उसको गले लगाओ और भगवान का प्रसाद लेके उसको आगे बढ़ो. जी, सुचित्रा, कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस वीडियो जो आपने अभी दिखाया? Yes. देख, मैं गुम हो गया था, उसको देख रहा था, जो द वे इस वीडियो इज टेकन एंड सो मेनी पीपल आर indulge in this one meditation. जी. So our Adi Gurus had one thought that there must be some way that, see, we all actually, it's that very interesting story of the Kasturi Mriga, jo ki round and round and round the musk deer, it keeps going, looking for the scent, where the scent is coming from, but cannot find it. तो लाइक दैट वी ऑल ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर जो है ना, हम उस चीज को पहचानते नहीं हैं, तो घूमते रहते हैं. तो सिर्फ हमें घूमना थोड़ा बंद करके अंदर की ओर ध्यान देना है. तो जो बात ये है कि आप छोटे से, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट लाइक दिस, कि आपको कोई प्रॉब्लम है ना,
आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, तो आप 1 मिनट बैठ जाते हैं और थोड़ा रुक के ना, लाइक आंखें बंद करके आप सिर्फ यू जस्ट टेक अ मोमेंट, देन थिंक अबाउट इट कामली, तो तब दिमाग ठीक से काम करना शुरू हो जाता है. इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम उस टाइम पे व्हेन वी आर एजिटेटेड, we get even more, like we start shouting, we start moving about, we start trying to find a problem, solution to the problem, तो वो हल नहीं होगा. मगर जब आप बैठेंगे आराम से, तो कुछ ना कुछ तो निकलता है उसका हल. या तो आप मंदिर में जाते हैं, या कहीं भी मंदिर गिरजा कहीं भी जाएंगे ना, तो आप क्या करते हैं वहां पे जाके ना, हाथ जोड़ते हैं, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं. क्यों? मूर्ति तो आपके सामने है, तो आंखें क्यों होती हैं? क्योंकि somehow we are hardwired कि हमारे अंदर है वो दिव्य शक्ति या जो भी है, that God is within us. Like, you know, they say search not outside, the kingdom of God lies within your heart. So like that, you know, just if you are able to, तो हमारा mind, no, it's like a monkey. वो भी एक और आपने सुना तो होगा ये about one master. One person goes to a master and he says, I need to calm my mind. I don't know how to do it. So the master says, तुम कुछ भी करो, don't think about a monkey. The moment he says that, immediately monkey comes into your mind, है ना? So our monkey mind is like that also, like we cannot stop thinking of the monkeys. तो जब ये when the mind calms down, तब कुछ होता है मैजिक. द वे टू काम डाउन, आप देखिए हर कोई जो सिचुएशन, आई मीन एवरी प्रैक्टिस, आप लाइक इफ यू सी आवर ओल्ड गुरुज एंड ऋषिज, साधुस क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे. महावीर जो भी हो, सब दे ऑल यूज्ड टू मेडिटेट. एंड चाहे उसमें बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, मगर you know, अंदर कुछ हो रहा है. And I was thinking of this, you know, very like your in the Sindhi tradition, you have that Sasui and Panu. Sasui is always talking. She is always talking about how there is a desert. कुछ भी नहीं है, बंजर जगह है, कुछ नहीं है उसमें, मगर वहां से निकालना मत. और they will not even they don't want to give up their search also. क्योंकि अंदर से जो एवोल्यूशनरी पुल जो है ना, बहुत स्ट्रांग है. छोटे बच्चे को आप देखिए ना, वो गिर के they'll keep standing up, क्योंकि एवोल्यूशनरी पुल है, you know, that they have to stand, they have to walk, they have to run. Similarly, हमारा एवोल्यूशनरी पुल है कि हमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना ही है. We have to go inside. अंदर जाने का रास्ता more or less सब कहते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू है. क्योंकि जब दिमाग, when our mind calms down, you know, you take a pond which is full of waves. Suppose there are gold coins at the bottom of the wave pond, आपको दिखेगा भी नहीं. मिट्टी हो, गंदा हो, जब आप उस पानी को साफ करेंगे और बिल्कुल उसको ना, जैसे स्टिल, यू विल गेट अ स्टिल पॉन्ड, तब आपको दिखेगा कि अंदर क्या है. तो मेडिटेशन इज लाइक दैट, कि आपको पूरा उसको बिल्कुल काम कर देना है और उसके अंदर जो गंदगी है उसको निकाल देना है. तो अंदर की जो हमें वहाँ पे जो खजाना है ना, तो वो दिख जाता है. वो खजाना कुछ नहीं है, सिर्फ हम ही हैं. इट इज अस. तो ये मेडिटेशन आपके लाइफ में क्या बदलाव लाई? पहली बात तो ये है कि देखिए, नजरिया बदल जाता है. हम अपने आप को ना, वी डोंट थिंक ऑफ अस ourselves as individuals. We understand that we are part of a full universe. Everybody is the same. And then there is a certain detachment which comes in. See, most of our lives we are led by desire, and we are pushed back by fear. And all this is the play of the ego. जब आप मेडिटेटिव पाथ पे आते हैं ना, तो ये जो ईगो का काम है ना, तो वो आपको
मालूम पड़ जाता है कि दिस इज द प्रॉब्लम, कि हर चीज में ईगो की वजह से हम वी गेट इनटू ट्रबल. तो you start getting a sense of detachment, and when you start feeling that ये अपना काम ही नहीं है, हमारा मकसद ही कुछ और है, तो फिर लाइफ बहती रहती है और आप भी उसके साथ बहते जाएंगे. तो becomes, that's why when I hear people saying नहीं जब हम 80 साल के हो जाएंगे, नहीं तो हम जब हम रिटायर हो जाएंगे तब हम शुरू करेंगे. आप तो जैसे as early as possible, छोटी उम्र में अगर हम शुरू कर, सी बेस बन जाता है. Everything, our problems come from the way we have an attitude to life. When the attitude becomes good, life becomes easy. एक सवाल पूछना है आपसे, स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? अपनी जी, अब हम तो स्पिरिचुअलिटी तो लाइफ ही है. हम वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स. जी. तो लाइफ इज स्पिरिचुअल. हमने क्या किया है, हमने उसको गलत तरीके से समझा है. हमने सोचा है कि लाइफ मटेरियल है, खाना, कमाना, शादी करना, व्हाटएवर, बच्चों की देखभाल करना या कुछ भी हो, जैसे ये सब हमने इसको लाइफ समझ रखा है. मगर हम जो हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं. तो जब हम उस चीज को समझ जाते हैं और उसको अपना फाउंडेशन बना लेते हैं, तो तब आप क्या कहेंगे, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी तो कुछ नहीं, इट इज लाइफ. लाइफ इटसेल्फ इज स्पिरिचुअल. मुझे उसमें कोई फर्क नहीं दिखता. हैप्पीनेस, पीस, हार्मनी, कंपैशन, लव, वननेस. ओके. तो काफी लोग स्पिरिचुअलिटी को लेते हैं विथ रिलीजियसली. अगर रिलीजियसली कुछ काम करें तो ठीक है, उसमें स्पिरिचुअलिटी एक्सट्रैक्ट हो जाती है, जैसा दूध में से मक्खन निकलता है. तो मैं काफ़ी लोग बोलते हैं यार ये रिलीजियसली काम करो, तो उसमें से अगर पॉजिटिव काम करते जाएंगे तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिक आती जाएगी. सब में स्पिरिचुअलिटी कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन उनको निकालना है. जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. जी. तो अभी हर चीज में है. हर चीज़ में. जी. हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि दूसरों को भी सिखाएं. जो हमें नॉलेज है, एक अच्छी बात है, जो हमें जो अच्छी चीज़ मालूम है दूसरों को भी सिखाएं ताकि भाई पूरी सोसाइटी को. तो आप क्या चाहते हैं कि सब दूसरे भी लोग सीखें और क्या सीखें? तो मेरे पास एक स्लाइड शो है, पहले वो देख लेंगे. जी. फिर उसके बाद देखिए, जब मैंने शुरू किया तो एक्चुअली क्या हुआ कि आई वाज स्टेइंग विद अ फैमिली फ्रेंड जो कि मेडिटेशन भी करते थे. मुझे मतलब अहमदाबाद में, आई हैड टू गो फ्रॉम दिल्ली से मुझे जाना पड़ा. तो मैं तो वो काफ़ी मुझे बुक्स देते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो. मैं रोज़ बहुत रिलीजियसली पढ़ती थी. आई वाज रीडिंग. बट देन ही सेड तुम पढ़ते रहोगे और मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहोगे, बट यू हैव टू करो और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी हर चीज़. तो जैसे आप मैंगो के बारे में बोलते रहेंगे, मगर जब तक हमने मैंगो चखा नहीं ना, तब तक उसका आइडिया नहीं होता. तो वैसे ही मेडिटेशन का भी, जो अगर आप चखेंगे नहीं तो उसका मज़ा नहीं आएगा. तो एक स्लाइड को आई विल जस्ट शो, और फिर उसके बाद जो तरीका है, थोड़ा 10-15 मिनट हम मेडिटेट करेंगे. रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ है. और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कुछ हो तो वी कैन हैंडल दैट. जी. तो आई विल जस्ट शेयर द स्लाइड नाउ, स्लाइड शो. हाँ. So as I said, this is a heartful approach to life, because we feel that from the heart we get the correct inspiration. So now today's life, we live in a life, that where already you can see there is a huge war going on in the world. It's volatile, it's complex, it's ambiguous. There are so many problems. We had a society, which was hierarchical, it was religious. There was, it was change was very slow. Now it's very different. It's very open. People are seeking for meaning, especially after the pandemic.
They want to know कि क्या किया जाए, why are we stuck like this? How do we develop? Economy was very slow and stable. अभी बहुत जल्दी बढ़ रहा है, especially with technology. It's going on and on and on. Like we don't even know from one day to the next what we'll find. Similarly, so I've talked about technology. So we are in a very different situation where things are just like, it's almost like we don't have the ground beneath our feet. So how do we find that stability? How do we find meaning and centrality in our life? Organizations are trying to change and to thrive in this, but individuals are getting discontented, demotivated, stressed out. When I was growing up, we never heard the word stress. आजकल तो इवन बच्चे भी कहते हैं कि मैं मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मम्मी बहुत स्ट्रेस हो रही हूँ. आई एम लाइक व्हाट इज दिस. We are getting to a place where there's too much negativity in this way. So what we looked at is, this is a very nice sort of a thing what I want to show, that when we talk about meditation, we talk about focus and effortless. This gray thing is what is meditation? It is focused, it is effortless. And how? So what's happening is we are getting, why is it that we have so many problems? Is because our mind, I talked about the monkey mind, that we have too many thoughts. The mind goes everywhere. See, the mind is not restricted by where you are, whether Bangkok or Bangalore. It can go to Antarctica also. And most of what we think is distracting us, but not relevant to us. So what happens is, because our mind is constantly moving, we are not able to regulate it. We're not able to get to what we want. So we feel tired, we feel distracted, we feel dull. But what we want to do is to get to alertness, focus, and freshness. So when we do meditation, what happens is, we take this monkey mind and we just bring it down to one thing, ekagrat. So it's just one thing, one idea. And that idea is, we take the object of meditation, which is the heart, and we just take out all the other ideas, all the other thoughts, we let them go. Now, what happens is, when our mind comes down to focus on one thing, we suddenly find something happening. Our mind becomes clear. And that clarity helps us to become creative, to take the right decisions. We're constantly asking our friends and peers and other people, do you think this is right? Do you think this is right? What should we do? I'm confused. This seems to be the usual thing. But when our mind becomes very clear and very focused, we don't have to ask anybody. When we are relaxed, the answers emerge from inside. What happens is, the synchronicity between the mind, which is a relaxed and very one focused mind, and our heart, which is the seat of divinity. When that connection happens, the heart tells us what is correct, the mind tells us how to go about it. So the mind helps us to achieve that task, but the heart tells us what we should do. So through meditation, we regulate the mind. We have, in our practice, we have three main practices. So this is why we, in Heartfulness meditation, we focus on the heart. So the first practice in that is the meditation, where we just relax and we bring our attention to the heart only, and that regulates the mind. The second practice is, you see, no matter what you do, you take a light bulb. If you take a light bulb and you connect it to a switch, you can switch it on, the light bulb might work. So imagine that, you've put it on, but suppose the bulb is so filthy and so dusty that the light doesn't shine through. Unless you clean it, you cannot achieve that. The light cannot shine through. So we have to get rid of our past burdens and what holds us down. And we also have to connect to our divinity and inside within ourselves. So these three practices actually form the core of the Heartfulness practice.
anybody is interested, I can, they can get in touch with me later, and then we can proceed on, understand it further. So this is the very simply, actually, in very few minutes, I've told you what we are doing. But it's a lifetime of practice. We're a non-profit organization. The meditation is offered absolutely free. There is no prerequisite for anything. You feel that you want to start meditation, you can get in touch, and that's all. And we are there in about 150 countries. We have many trainers. We have many practitioners, and it's growing by the moment. Everybody, anybody who's interested can join in. And we have many offerings. We are yoga, pranayam. Apart from the core meditation practice, there are magazines, there are online resources, and we have many programs also that we do for corporates and individuals, schools, governments, army, the military things. Everywhere, we are trying to get people to join in, because we feel that harmony across the world, peace across the world, can be achieved only when people know that their hearts are all joined and find the peace. Every individual finding that peace in their heart will create a world which is peaceful. And we have a WhatsApp. There is a mobile app. It's called WhatsApp. There's another one, Hearts in Tune. So you can easily connect also using your mobile anywhere in the world. So we are at the end of this, Pavniji. You're muted, sir. मोस्टली मैं कभी म्यूट नहीं करता हूँ, आज भूल गया हूँ म्यूट, बिकॉज स्लाइड शो वाज गोइंग ऑन. ओके, स्लाइड शो जो आपने स्लाइड शो दिखाया काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, और मैं ये जो ऐप है दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग. पीपल दे कैन log in from anywhere. Absolutely. Mm-hmm. So, what we have is we have trainers all over the world. You can log in wherever you are, whether you're, anywhere across the world, you can log in. There are trainers who are also available across the world. And you can say, I want to have a meditation one-on-one session with you, and they can do it. So you see, the thing is that just like I'm sitting in Bangalore, you're sitting in Bangkok, and people are sitting all over the world and listening. So we are doing this through the medium of something, technologies allowing us to do it. So meditation, the connection between the heart needs no technology. You see, if you think of your child who's maybe sitting in America, do you need a technology? You need nothing. Your heart. Enough, na? जी. Similarly, meditation भी वैसे ही चलता है. मैं यहाँ पे बैठ के I can do a guided meditation for anybody across the world, because it's from my heart to the other person's heart. And we have a beautiful thing in our system. It's called pranahuti. So pranahuti is called, loosely can be translated as transmission. It's like the yogic energy of a very high order, which is going from a trainer to the seeker, which kind of helps to boost the person who's doing meditation. And it's like, if you take a car and you accelerate, what you're doing is you're increasing the amount of petrol going in there. So you accelerate and you rev, right? So this is like a boosting which happens to a person, and it helps him to achieve the goal much faster. So or I can talk about it, but only if you experience, you'll really know. So yeah, it's open to everybody, and it's absolutely free. There's never a charge for it. That's also something I want to really say. जी, सुचित्रा जी, आप जो सिखाती हैं, तो आज दर्शकों को आप कुछ सिखा सकते हैं? Absolutely. तो हम अभी बैठ सकते हैं 10-15 मिनट. जी. तो जी. मैं आपको बताती हूँ उसका तरीका क्या है, और बहुत आसान तरीका है, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है. तो आप आराम से बैठ जाइए. जहाँ भी बैठे हैं, आपको कोई आसन में बैठने की ज़रूरत नहीं है. हमारे गुरु कहते हैं कि जो आपका जो कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है, वही आसन है. तो जिस
आसन में आप बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं, चाहे आप चेयर पे हो या पलंग पे हो या सोफे पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दैट्स नॉट द फोकस। और अगर आपको थोड़ा जैसे एडजस्ट करना हो अपना पोजीशन, वो भी कोई बात नहीं है, यू डोंट हैव टू सिट वेरी स्टिल, बिकॉज फिजिकल डिस्कम्फर्ट इज नॉट द थिंग, इट इज हमें अंदर की बात है ये, तो वी आर गोइंग इनसाइड आवर हार्ट्स, तो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ओनली थिंग इज आंखें बंद करके करना है। तो मैं एक आसान सा जो रिलैक्सेशन टेक्निक है, मैं उससे शुरू करेंगे ताकि हम थोड़े मूड में आ जाएं। इट्स अ वेरी सिमिलर लिटिल सिमिलर टू द योगिक योगा रिलैक्सेशन, बैठ के कर सकते हैं। तो I'll just give the instructions. So just follow the instructions, and then after that we'll do just about 10 minutes of meditation. तो मेडिटेशन प्रैक्टिस क्या है मैं बता देती हूँ। तो जैसे ही रिलैक्सेशन खत्म होगा, आई विल से दैट प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। आपको सिर्फ ये करना है कि आप ये इमेजिन कीजिए कि आपके हार्ट में, फ्रॉम द हार्ट देयर इज अ डिवाइन लाइट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड योर हार्ट। तो आप ये समझ लीजिए, डोंट लुक फॉर अ बल्ब और लाइट और दिया और समथिंग। इट्स जस्ट लाइक सपोज यू एंटर अ रूम एंड द लाइट इज ऑन, आपको मालूम है कि वहां पे रोशनी है, आप ढूंढते तो आप, यू डोंट लुक फॉर द लाइट ना, आपको तो मालूम है कि वहां पे रोशनी है। उसी तरह आप अपने दिल के अंदर रोशनी जो है ना, आपको मालूम, आप ये सोच लीजिए कि है वो दिव्य ज्योति अंदर है, और सिर्फ आपको अपना जो माइंड है उसी पे, यू हैव टू कीप इट rested on that thought, just keep that. So thoughts आएंगे, you will get some thoughts, जाने दो, like you have clouds in the sky, तो हवा के झोंके के साथ वो जैसे चले जाते हैं ना, उसी तरह आप उनको जाने छोड़ दीजिए, they'll go. Just keep gently bringing your mind back to this idea that there is a divine light in my heart and I am resting my mind on that thought. बस। और फिर क्या महसूस करती है ये आप थोड़ा जस्ट बी सेंसिटिव टू दैट, कि आपको क्या फील होता है, बस। तो इट्स जस्ट अ वेरी लाइक इट्स जस्ट लाइक हैविंग वन वेरी स्मॉल झलक ओनली, बट वी कैन डू इट। ठीक है, तो शुरू करें जी। सिर्फ मैं एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आंखें खुली रहती हैं तो फिर बहुत उसमें से हमें वी गेट टू मेनी स्टिमुलाई। तो we'll start. Please sit comfortably. If you need to move your position to adjust your position, please don't feel worried about it. Go ahead. We'll start with the feet. Let the energy from Mother Earth come into your feet, relaxing your feet. Relax your toes. Relax your ankles. Feel the energy moving up through your ankles, up your calves. Relax your legs and your knees. Feel all the tension leave your feet. Just simply relax. Feel the energy moving up through your thighs, totally relaxing, totally free. Feel the energy moving up through your pelvic region, relaxing your lower back. Let go of any tensions, any tightness. Totally relax yourself. Relax your abdomen. Leave your muscles absolutely free, totally tensionless. Feel the energy moving up to your upper back. Totally relax your back. Feel all the muscles absolutely free of tension. Feel the energy moving into your chest and your shoulders.
Feel your shoulders absolutely melting away. And feel the energy moving into your arms, relaxing them. Relax your elbows, your lower arms, your hands, your fingers, your nails. Every part of your arm is totally relaxed. Let the energy move up into your neck. Let go of all the tension in your neck. Absolutely relax yourself. Relax your face, your chin. Have a gentle smile on your lips. Relax your cheeks, your nose, your eyes, your eyebrows, the space between your eyebrows, your forehead. Feel the energy move up to the top of your head and totally relax yourself from the top of your head to your toes. Totally relax. Now gently move your attention to your heart. Relax your heart. Let go of any burdens or any tightness that you might feel. Feel totally relaxed and happy. Now gently bring your attention to your heart. Imagine there is a divine light already present in your heart which is pulling you inwards. And let your mind rest on that. Don't worry about any thoughts that might come. Just simply let them go and gently keep bringing your mind back to your heart. When I say please start meditation, just start this process. When I say that's all, slowly open your eyes when you're comfortable. Take a few minutes to feel what is happening and then completely open your eyes. So let's start. Please start meditation.
That's all. Just take a few minutes to absorb what you're feeling and then gently open your eyes. बहुत आज हमारे साथ अच्छे गेस्ट जुड़ रहे हैं। जी, अच्छी मेडिटेशन हो गई। बहुत अच्छा। हमारे साथ डॉक्टर मोहन भी हैं चिल्ली से, और डॉक्टर पीताम्बर नमस्ते। जी बॉम्बे से, पूना से जुड़ रहे हैं। हैप्पी Thank you. शिवरात्रि टू ऑल। जी थैंक यू, Happy सेम टू यू ऑल। Shivratri. Jai Jhulelal. जय जी झूलेलाल। सुचित्रा जी, अभी इसके मेडिटेशन के बाद आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे या हम गेस्ट से कुछ बातें पूछेंगे? हाँ, बेटर टू हैव सम क्वेश्चन आंसर। कुछ पूछना है तो मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर। जी, That'll be better. पहले क्यों डॉक्टर मोहन पहले थे तो उनसे मैं पूछ लेता हूँ। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और इतना रिलैक्स मिला। आई फील आई एम लकी एंड ब्लेस्ड। हमारे अंदर में सर में जैसे करंट आ रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि आई एम सो लकी एंड ब्लेस्ड। आई एम Thank you. वेरी मच रिलैक्स्ड। Today guided meditation was very good and it was really relaxing. हम लोगों को सबको करना चाहिए। और जो आपका जो चैनल है, जो हार्टफुलनेस, जो आपका जो ऑनलाइन नॉन प्रॉफिटेबल जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पीताम्बर दलवानी जी। ये काफ़ी एक्टिव हैं सोशल वर्क में। आज पूना में भी इन्होंने बड़ी शिवरात्रि का महोत्सव किया है। मुझे मालूम पड़ गया पूना में उन्होंने किया है, लेकिन मुझे यहाँ तक गूंज के आई आवाज़। जी डॉक्टर पीताम्बर जी। Thank you, पपनी ठाकुर जी। और मैडम का हमने ऑफ द बैक में मैं सुन रहा था जो मेडिटेशन उन्होंने किया, मैंने भी 2 मिनट ट्राई किया एंड आई फील कि 2400 करंट मेरे बॉडी के अंदर घूम रहे, 2400 वॉट्स का करंट। सो रियली इट इज ग्रेट because I never do meditation. This was the first time I tried because my wife keeps saying, "Arey, do." So, but today, when I did 2-3 minutes, I really felt that I'm much lighter feeling. So, thank you, Suchitra ji. आपने इतना प्रोग्राम अच्छा किया। मैं अपनी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट हर मंथ में एक बार आपको प्रोग्राम पे लेके आवे। कम से कम मेरे जैसे 2-4 लोग भी उनमें से फायदा ले ले। तो पूना it will में be great. हाँ जी। डॉक्टर साहब, पूना में हमारा बड़ा सेंटर है। वहाँ पे एक रिट्रीट सेंटर भी है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मेडिटेशन भी करते हैं। तो जब भी आपका मन करे आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं या आप देख सकते, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन पुट यू ऑन टू सो मेनी पीपल देयर हु आर इन पूना डूइंग दिस, सो प्लीज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स ने अभी आज लगता है शिवरात्रि की वजह से काफ़ी गए होंगे टेंपल में इसी टाइम में। कोई व्यूअर्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ थ्रो द क्वेश्चन ऑन अ स्क्रीन and if not then you can send questions later on also. If you have anything to contact with you want more information, we can get from सुचित्रा से हम पूछ के आपको कनेक्ट कराएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। आज हमारा सेशन अच्छी तरह से टाइम पे एकदम, वी आर एग्जैक्टली ऑन टाइम। 1 घंटा भी हो गया। और आपका सुचित्रा जी, एक लास्ट सवाल, यूथ के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? व्हाट दे शुड डू? आज यूथ जो पीढ़ी, हम तो जो सीनियर सिटीजन हैं, वी आर लिविंग इन अ बोनस लाइफ। यस, हम जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं और सब लोग ये स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीताम्बर ही इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क। ये अफ्रीका में है एक्चुअली उनका बिजनेस व्यवसाय,
लेकिन वहाँ पर जाके इन्होंने उधर के लोकल लोगों को हमारी हिंदू धर्म के बारे में उनको काफ़ी सिखाया। They do Ganpati, they do Shivratri, they do everything, no? So hats off to you, Dr. Peter. हाँ, और ये जो डॉक्टर मोहन जी भी हैं, वो चिली में हैं, वो भी अच्छा काम करते रहते हैं। इनफैक्ट ही इज़ एक्चुअली एक्टर, फिल्मों में भी Okay. काम कर चुके हैं, ही इज़ अ डायरेक्टर, फिल्में Oh, बना भी चुके हैं और काफ़ी एड फिल्मों में भी इन्होंने एक्ट किया हुआ है। okay. जी, Nice. थैंक यू वेरी जी। मच। हाँ, अभी जो सवाल मैंने आपसे पूछा वो यूथ के लिए, आप मुझे वो बताएं। I answered a little bit in the during the session itself. I feel that you see what happens is that life is difficult. It has so many challenges, ups and downs, and as you are when you're young, you have so many issues to think about your work and then your career and your marriage and this and that. So many things, and the problem now is that the world is moving so fast that and all the family ties are getting broken, society itself is broken up, communities are broken up. तो आप किसको पकड़ेंगे? पहले तो हम अपने वी यूज्ड टू लिसन बुजुर्गों की जो बात हम मानते थे, आजकल तो वो मानते भी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि दे आर फीलिंग वेरी जैसे लाइक अ बोट व्हिच इज इन द ओशन, स्मॉल बोट, कभी यहाँ कभी वहाँ, लाइक थ्रोन अबाउट। तो आई वुड से कि स्पिरिचुअलिटी से जो actually if you are able to meditate and you're able to find that centeredness inside yourself, it helps you a lot. I started meditation when I was joining college, so for a long time I've been doing it. I can tell you one thing, that many of these silly things that sometimes, like when you're a young person, you get perturbed by, you get uh, you know twisted around like that. Those kind of things didn't really bother me because my focus was elsewhere. तो मेरे हिसाब से बच्चों को तो जल्दी शुरू कर देना चाहिए, ओके, अर्ली एज। लेकिन अभी अर्ली एज। उनको, हाँ, तो एक्चुअली दे कॉपी अस, व्हेन वी डू इट दे फॉलो अस। तो आजकल के जो पेरेंट्स इतने बिजी रहते हैं मोस्टली दूसरे कामों में, तो मेडिटेशन अपने रिलीजियस जो भी हैं, मंदिरों में जाना या कुछ करना, कम्युनिटी सर्विस में जाना, हालांकि अवेयरनेस इज देयर, लेकिन कभी कभी आलस होता है। अगर हम आलस करेंगे तो बच्चों को भी वही आलस आएगा, बिकॉज दे कॉपी व्हाट फादर डज, son will do same thing, what mother does, daughter will do same thing। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं ऐसे करो, ये राइट है, वो राइट है, लेकिन वो फट से, आजकल के बच्चे फट से बोल देंगे यू नेवर डिड इट एंड यू आर पुशिंग अस। लेकिन आजकल के बच्चे, उनको खुद का सेंस है, उनको दे हैव ऑल द गैजेट्स इन देयर हैंड्स, सो दे रीच आउट। कभी कभी हम बच्चों से सीखते हैं, आजकल बच्चे हमें बताते हैं। तो ठीक है, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है, सेंटर्स में जाना चाहिए। हमारा काम यही है कि भाई जितनी अवेयरनेस लोगों पे पहुंचाएं, बहुत अच्छी हो जाए, बहुत है, अच्छा है। पेरेंट्स को भी चाहिए अपने बच्चों को उस तरफ ज़्यादा भेजें, बनस्बत जाके डिस्को में जाना, या I don't know, means I don't want to say negative thing. Okay, sometimes parents they feel that is good. हम कोशिश करते हैं कि आजकल के जो हमारे, मैंने जो जो रैंक, हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। और वेस्टर्न, अभी आपके जो वीडियो में देखा, काफ़ी वेस्टर्नर हैं, यूरोपियन हैं, जापानीज हैं, दे आर फॉलोइंग आवर थिंग्स। करेक्ट, या हम उधर जा रहे हैं, वो इधर आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है पपनी जी, बैलेंस हम्म, होना चाहिए। देखिए, आप सुबह से शाम तक जब तो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट, यू आई मीन, हम वी ऑल हैव टू अर्न आवर लिविंग, वी हैव टू डू व्हाटएवर आवर वर्क और व्हाटएवर आवर ड्यूटीज आर, वी हैव टू टेक। तो हम्म, मेरे हिसाब से जो मेडिटेशन, सी मेडिटेशन तो प्रैक्टिस है, बट इट्स द नॉट द एंड, it is not the, हम्म, it's only a means. What we need to do is to actually find the meditative attitude to life, how to be centered, be happy inside yourself. बाहर हम्म, ढूंढने की जरूरत नहीं है, पैसों से खुशी नहीं मिलती। और डिस्कोथेक जा सकते हैं, कोई
बुरी बात तो नहीं है, मगर जी रोज रोज जाएंगे उससे कोई फायदा नहीं है. यू विल नॉट फाइंड दैट हैप्पीनेस. 2-3 बार जाएंगे तो उब जाएगा मन, यू नो. जी Whereas this kind of what you find inside, उससे तो कभी नहीं उगता. इवन टुडे आई फील लाइक अ बिगिनर. मैं बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि आज भी मैं पहली बार बैठी हूँ. हम्म, तो क्या है कि यू नो बिकॉज एंड जब when we are finding that inside, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. The happiness. आज सुबह वो गाना चल रहा था, पुराना गाना था, मना देगा, मन की आंखें खोल. हाँ हाँ तो अंदर जब व्हाट यू आर सेइंग, खुद में झांको, खुद में देखो. तो वही हाँ जी. पुराना गाना जो आई थिंक 1960 में रिलीज हुआ था, मन की आंखें खोल. तो ये हमारे आज गाने बहुत अच्छे हैं एक्चुअली. लॉट ऑफ सॉन्ग्स हैव लॉट ऑफ अच्छे अच्छे जी मीनिंग. मीनिंगफुल, यस. जी जी हाँ जी, फैंटास्टिक. आज का सेशन फैंटास्टिक रहा. आई थिंक काफ़ी व्यूअर्स इसमें से लाभ उठाएंगे. दे विल डेफिनेटली. आई होप. एंड जिन जिनको भी अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमसे जुड़ें, और आपको मैं आपकी तरफ फॉरवर्ड करूंगा उनके कॉन्टैक्ट्स. अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच. सब लोगों को कहेंगे कि भाई बड़ों का ख्याल रखें, इज़्ज़त करें, छोटों को प्यार करें और अपना ख्याल रखें. पैंडेमिक के टाइम में हेल्थ इज़ वेल्थ, वो भी देखना है. ऐसे ही बैठे रहेंगे तो गपशप, तो उससे अच्छा मेडिटेशन करेंगे. With this one, we like to end this one. Thank you very much and Thank happy you so much. Shivratri to I you all. really appreciate जी what you're doing. It's amazing work. Totally जी amazing. But जी such dedication and sweetness. So thank you so जी much. जी, थैंक यू मोहन जी. आप हर टाइम आते हैं और थैंक यू आशीर्वाद दे के सर. जाते हैं. नहीं आई नहीं, एम ब्लेस्ड. जी, थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच. आप हमें बुलाते हैं, लेकिन एक और भी बात मैं कहूँगा यूथ के लिए. जी जी अगर वो भले कुछ भी कर रहे हैं, अपनी तरीके से लाइफ जी रहे हैं, इंजॉय करते हैं, कुछ में बुराई नहीं है कोई भी, लेकिन लाइफ में कुछ टाइम पर, कुछ पड़ाव पर उनको सीनियर सिटीजन्स की कुछ बातें हेल्प कर सकती हैं. अगर उनकी राय लें तो उनकी राय पर फॉलो करेंगे ना, तो सीनियर सिटीजन से बहुत कुछ अच्छा फ़ायदा हो सकता है उनको, या क्योंकि उनको वी शेयर एक्सपीरियंस है आवर लाइफ का. एक्सपीरियंस. हाँ. या लाइफ एक्सपीरियंस उन वी शेयर कर हाँ, सकते हैं. क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को बहुत सारा एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो उतार चढ़ाव देख चुके हैं, तो उनके विचारों से आज के यूथ को बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर उनको सुनेंगे तो. जी जी, फैंटास्टिक. जी, जी, ओके. विद दिस वन, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू Thank सुचिता you. जी. थैंक यू वेरी मच.